5, right? Law, Unit 5, and last unit we have started. It is Insolvency and Bankruptcy Code. What is insolvency? How many of you know insolvent? Please don't keep quiet. Let's speak. What is insolvency and bankruptcy? Hello? Hello? Yes. Anyone? Bankruptcy means? Yet? Bankruptcy mean? Okay. Tell me, insolvency and bankruptcy both are equal? Both are same? Yes or no? Hello? What do you say? Both are same or both are different? Okay. So, today we have seen Insolvency and Bankruptcy Code established in 2016. What is the rules? Why need for insolvency and what kind of resolutions have been done? So we have seen here. So World Bank ranking, okay, all over banking rank, we found that how many people are insolvent, right? So here are the showing graph, right? Existing mechanism inadequate and ineffective, right? No single law dealing with IB in India, right? Then overlap in jurisdictions, painfully slow pace, minimum 5 years, recovery rate is so less, more NPAs laying in banks, high process cost of insolvency, no chance of ease of doing business and easy exit. Right? So everyone know what is insolvency and what is bankruptcy. So insolvent means a person who have not eligible to pay their debt or their liability during the period and coming years, up to coming years. That means court declared the person that he is insolvent, he has no money and he is not able to pay a single rupees, right? Now what is bankruptcy? Bankruptcy means he's taken a lot of loans as an industry, right? As an industry uh, and number of things, and we have seen a number of people who do fraud with bank, right? So bankruptcy means बैंक के साथ उन्होंने corruptions किया है ना, कि बैंक से पैसा निकाल के, and we have a number of examples regarding this, right? So but it doesn't mean the bank will never recover, but bank would survey all over the people and they recover their money. For example, Vijay Mallya, Chanda Kochar, Nirav Modi, Harshad Mehta, right? And number of people who do fraud with the bank, but bank survey their properties and all and they recover the money. So that is different part. Today we have seen some codes of insolvency and bankruptcy. It's created on 2016 and what is effect on BC. So here overall insolvency resolution in World Bank ranking, not only single bank in India, every World Bank, right? So what happened, it is in India, right? In India the ratio of bankrupt is 136, means 60% people are in India who did bankruptcy and insolvency, right?
Singapore, only 1% or 20%, whatever. USA, 20%. UK, 15 or 19%. Australia, 27, means 5%. Yeah, 20%. China, 55. So that is the ratio of overall insolvency in bankruptcy, right? So why it's happened? What is required for that? So that is the थिंग लाइट ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस है ना. हमारे यहाँ जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, इंडिया की बात कर रही हूँ, सो इट्स नॉट गुड. इट मीन्स इतना ये नहीं, अभी हो गया है बट पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, राइट? सो पेनफुली स्लो पेस, मिनिमम 5 years, and it's going slow down, will wait 5 years. You know, the industry have a number of bad debts. What they did, they never clear or never zero the account. Why? Because they wait till 5 years. After 5 years, if they will not get any rupees from that account, so they declared, means auditors has a right to declare the bad debts or bad corruption, and it will mention in their account 10 years, 15 years, and number of years, because they hope like that कि आज नहीं तो कल मिलेगा. Got it? So recovery rate is so less. Yes, recovery is, हम लोग बहुत देर तक no punishment, अच्छा, and we think like that कि जितना है उतना तो मिले कम से कम. Got it? So that is the way. Now more NPAs laying in bank. Yes, bank have a number of NPAs. Lot of people are not paying such a means rupees. So bank faces NPAs. Now high performance cost of insolvency is day by day it's increased more and more. No chance of ease of doing business and easy exit. Yes, है ना, बिजनेस करने का भी कोई चांस नहीं रहता है, और वो से एग्जिट करना पड़ता है, वो स्टार्ट भी नहीं कर सकता, बिकॉज दे हैव a number of money, sorry, debts. Now all this is new prescriptions. Why? So promote entrepreneurship. What is the cause because of that? So bank and nowadays MSMEs and so we promote a number of fund to for entrepreneurship, right? And number of people they want to start their business, and bank provide them like 5 lakh, 10 lakh, 15 lakh, whatever. And coming for coming year, the person is not liable to pay money, and for that is the reason the person is insolvent, right? Now improve credit availability, whatever the credit, because become an entrepreneurship as a rule, government rule, that time they are not taking any kind of security and all, whatever their shop or all, only for that it. So मतलब उसके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आप उसे कुछ नहीं बोल सकते हो, राइट? सो इम्प्रूव क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ऑफकोर्स उसकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी, उसका जो है वो एटलीस्ट हमें ये करना चाहिए. तो अभी तो बैंक ये हो गई है कि भाई चलो तुम डिपॉजिट कर लो, तुम शेयर ले लो. आजकल तो बिना शेयर के कोई लोन ही नहीं देता है बैंक में, आपको कुछ तो लेने ही पड़ते हैं. सो इम्प्रूव क्रेडिट अवेलेबिलिटी, अवॉइड प्रोलॉन्गिंग टाइम, है ना. आप 1 साल के लिए या 5 साल के लिए ले सकते हो, 20 साल 15 साल के लिए नहीं ले सकते हो, क्योंकि उतना पैसा हैंग हो जाता है ना बैंक में. ऐसे ही अगर कितने 100 लोगों ने ले लिया तो करोड़ों रुपए हैंग हो गए, राइट? नाउ इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. गॉट इट? इंटरेस्ट जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनसे वो रिकवर नहीं होता है या फिर नहीं करते हैं. मिनिमाइज द रोल ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, है ना, जो जुरिस्डिक्शंस के पास है वो कम केसेस जाती है रिगार्डिंग दिस. बहुत ज्यादा हो जाता है, पूरा नील हो जाने के बाद जाती है, शुरू से नहीं जाती. मतलब 3 महीने 4 महीने पे नहीं किया तभी उसका केस डाल दो, तभी उसको नोटिस भेज दो, राइट? तभी से उसका SLR CLR ये कर लो, तो उसका वो टाइम पे करेगा, अदरवाइज वो बोलेगा कि नहीं है. सो दैट इज द इशू. नाउ लेजर कंप्लायंस मैकेनिज्म, right? So it's a very difficult in corporate companies to maintain their compliance, because every report have seen outstanding dues, outstanding dues, outstanding dues. So it's an effect. कंपनी पे तो इफेक्ट पड़ेगा कि इतना पैसा आने का है, मार्केट में इतना करोड़ों फंसा है, अभी इनके पास इतना है. सो दैट इज वेरी बैड इम्पैक्ट इन कंप्लायंस. Now avoid combination and complication of many laws, right? So we need to avoid uh, complications of many laws. If you are a CS person, company secretary, right, and you are working in company,
any company. So it's a responsibility of company secretary to fill every monthly compliances. If company not support your company secretary, that means he is responsible for that, राइट. सो मैंने भी देखा है एन नंबर ऑफ कंपनीज कंप्लायंसेस भरती ही नहीं है और फिर पेनल्टी भरती है, क्योंकि उनका रेस्ट्रिक्शंस है कि कितना आया है, कितना रेशो है, आपका कंप्लायंस क्या है, आपका कैश फ्लो क्या है, मंथली उसे पे करना है, राइट. सो अवॉइड कॉम्बिनेशन एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मेनी लॉज, और इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पे नहीं करते हैं. नाउ जर्नी ऑफ द आईबीसी, व्हाट इट इज जर्नी ऑफ आईबीसी. सो 21st December 2015 IBC bill of introduced in legislation, Lok Sabha, right? Now, 23rd December, IBC Bill of 2050 referred to Joint Committee of both House of Parliament, and 2016 IBC Bill of 15 Joint Committee placed its report to both House of Parliament. 2016 IBC Bill of 15 passed by Lok Sabha, then passed by Rajya Sabha, then it's assented by President of India and notified, means 2016 it's applicable by President of India. Now what is applicability of Indian Bank Code, Insolvency and Bankruptcy Code? It's called IBC, right? 2016. Why it's formed? So any company incorporated under Company Act 2013 or under any provision of previous act, the company who comes in 2000 Act, Company Act 2013, they are applicable in IBC 2016. So any other company governed by any special act everywhere, right? Now any LLP incorporated under the LLP Act 2008, right? Any other body as notified by the central government and partnership firm or individual. So all means as per Company Act company or corporated or incorporated company, then any governed company which is followed by special act, LLP act, then central government, partnership firm and individuals. What is the object of the code? Why they create? So creditors in control reside. Of course, nowadays we have pay GST, you know very well. जब तक आप उसका GST पे नहीं करोगे, आप आगे नहीं जाओगे, right? So the system is improved, right? Tax department improve the CGST, SGST. If I purchase a number of goods, but I never pay, मुझे बाकी उसके पैसे बाद में देने हैं, पर पहले क्या करना है, GST पे करना है. अगर मैं GST पे नहीं करती हूँ तो वो गुड्स मेरे तक आएंगे ही नहीं, right? So that is the control. Creditors in control reside. Consolidated existing insolvency laws and amends other legislation. Consolidates existing insolvency laws and amends others legislation. Whatever the legislation, whatever the rules regarding insolvency, they follow, right? Now overriding effect on all other law inconsistent with the provisions of the code. Yes, whatever the provisions, right? आप लोग return file करते हो, है ना? All of you file the return. I don't know how many of you, but when you file return, that time they ask you if under section 80, under section 50, do you have any? So n number of clauses and sections are there and provisions are there, right? So you read it, and then if it is applicable, you click yes. If it is not, you click no, right? So many provisions and so many clauses are there. So same thing also available here. Time bound resolution for evaluation and viability determinations of companies are referred for CIRP, right? So that is most important. Whatever the evolution, whatever the resolutions, means resolution is most important. Without resolution, they don't pass in company or incorporated company. Have no right to do anything without resolution. So that is most important. Clearly defined order of priority, right? It's most important to whatever the
priority you should follow. Investigation of attends transaction in case of illegal diversion of company. So investigate, you just investigate antecedent transactions if you feel like that that kind of transaction is not done. अभी तो आपको दिख ही जाता है कि क्या transactions हुआ है नहीं हुआ है, right? So case of illegal diversion assets of company, and we have seen a number of cases in the due to pandemic, right? So जिन्होंने means the companies who pay regular GST, right? So it will clear, and those company who not pay GST, it comes in litigations or whatever illegal cases. Basic terms, what it is: creditors, debtors, insolvency, bankruptcy, winding up, liquidation, and dissolution. So that is the basic terms, and on that terms will applicable for IBC, insolvency and bankruptcy code. Yes, am I audible? Am I audible? Hello, anyone? No. So that is the term. Okay, creditor, debtor, insolvency, bankruptcy, winding up, liquidation, and dissolution. So what is creditors? Come on. Creditor means, come on, फटाफट बताइए, what is creditors? Hello, clear the term. Creditors means, creditor means who is creditor? Yes. And debtor? Yes. So this is the terms of creditors and debtors: insolvency, bankruptcy, winding up. You know winding up? Yes. What is winding up? Come on, clear the terms first. What is winding up? Close the company, na? Right? Winding up means close the company. What in the process means मेरा loan वगैरह नहीं है, but मुझे बंद करना है. So I will pay all dues and debts. I clear everything, and then I will close the company. Now liquidation. What is liquidation? Yes. Come on. Hello. Liquidation means is it winding up and liquidation is same? Yes. अरे बोला. What is liquidation? Hello. लिक्विडेशन नहीं पता है आपको? ओके,
लिक्विडेशन मीन्स व्हाट, जैसे वाइंडिंग अप में हम क्या करते हैं कि सबका डेब्ट जो है वो क्लियर करके हम उसे क्लोज कर देते हैं। लिक्विडेशन में कैसा है कि जैसे मुझे अभी बिजनेस करना नहीं है, राइट, तो मैं क्या करूंगी, अगर कोई इंटरेस्टेड है मार्केट में तो उससे कंसर्न करूंगी, और मेरा जो एसेट है या फिर जो भी कोई करना चाहता है मैं उसे क्या कर दूंगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, राइट, क्लेमनेंट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास उसको पैसा देना नहीं है, पैसा नहीं है मुझे उसके देने के लिए, राइट, तो मैं क्या करूंगी, यार ठीक है मेरी कंपनी में ये एसेट है, ये ले ले तू, ये है वो ले ले तू, है ना, दैट इज लिक्विडेशन, इट्स नॉट अ ट्रांसफर, राइट। सो दैट इज द लिक्विडेशन की कंपनी को बंद नहीं करना है मुझे, बट उसको चाहिए तो मैं ऐसे उसका क्लेम पे करूंगी। दैट इज द प्रोसेस, मीन्स द प्रोसेस ऑफ बिजनेस टू एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग its asset for their claims, regarding claim. Got it? And what is dissolution? और ये कब होता है, ये सारी जो चीजें है ना, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, डिसोल्यूशन, ये सारा इंसॉल्वेंसी के टाइम पे ही होता है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो बैंक या कोर्ट डिसाइड करेगी यार इसके पास जो एसेट्स है वो क्या करो, जिसके जिसके पैसे देने हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट, समझ में आया? एंड व्हाट इट इज डिसोल्यूशन, व्हाट इट इज डिसोल्यूशन? yes, no one knows? yes, डिसोल्यूशन बताओ कैसे, फाइनेंस के बच्चे हो। Dissolution means it's also using on the time of insolvency, means you are not able to pay someone's, so court and bank declared you dissolved, and if you are a partnership firm, that means a person, only single person wants to, जैसे चार लोग हैं तो चार में से अगर किसी ने क्विट कर दिया so that is dissolve, उसका भी प्रोसेस होता है, on that basis पे वो किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, मीन्स उस कंपनी को हटा दिया जाता है विथ प्रोसेस, वॉट एवर द असेट्स, वॉट एवर द पार्ट्स, वॉट एवर द कंपोनेंट्स जो भी होते हैं, ये वो सब क्या किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस उसे डिसॉल्व किया जाता है, डिसोल्यूशन, राइट। डिसोल्यूशन का एग्जांपल है क्या आपके पास? डिसॉल्व करना मीन्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिसॉल्व करना, इफ यू ग्लास ऑफ वाटर है और उसमें अगर मैं शुगर डालती हूँ तो क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, नमक डालती हूँ तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। सो दैट इज द डिसोल्यूशन, इट्स अ आयरनिक, राइट। सो डिसॉल्व करना मीन्स एक से दूसरे में इन्वॉल्व करना, लेकिन पहले वाले का सब क्लियर हो जाएगा, दैट इज डिसोल्यूशन। जैसे किसी ने बोल दिया कि मैं खरीदता हूं तो वो सब उसका जो असेट रहेगा वो सब उसके इसमें चला जाएगा, राइट, सो दैट इज द डिसोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट, हु कैन इन्वोक, राइट, इन्हें कौन इन्वोक कर सकता है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेक्शन 7, right, section 7 comes in financial creditors, any person to whom a financial debt is owed and includes a person to whom such debt legally assigned for transfer, legally, है ना, जब तक कोर्ट डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक। so all things, creditors, insolvent, bankrupt, winding up, liquidation, dissolution happen under the court of law, right? Now operational creditors, है ना, financial creditors means जिनको पैसा देना है या लेना है, whatever देना है, ठीक है, एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो अभी भी चल रहे हैं उनके साथ ट्रांजैक्शन, अ पर्सन टू हुम ऑपरेशनल डेब्ट इज ओन एंड
includes any person to whom such debt legally assigned or transferred. Everything happened with legally. Now corporate debtors, section 10. A corporate person who owes a debt to any person, that is corporate debt. Now invoking provisions of code. Default, right? N number of people are default in company. So what kind of default they? So in case of company and LLP, LLP agar company hai. So in case of partnership and individuals, minimum amount of rupees 1 lakh and minimum amount of 1000, right? So individual के लिए 1000 का दिया है default, अगर 1000 का करते हैं तो he is liable to invoking the provisions, and LLP में 1 lakh. Now minimum amount of 1 lakh and 1000 can be increased up to 1 crore and 1 lakh respectively by corporate government. So where any company or LLP commits a default in paying its what? Financial debt and operational debt, है ना? Financial debt means अभी मैंने बताया financial debt means payment to debtors, creditors, right? And operational means going on, जो भी चल रहा है ना, आप जिसके साथ फाइनेंशियल डीलिंग कर रहे हो, 90 डेज के बाद पैसे देना है ना, ऐसा वगैरह डीलिंग जिसके साथ कर रहे हो, दैट इज तो रेगुलर. सो ऑपरेशनल मतलब वो चल रहा है. Then a company creditors, operational creditors, company and LLP, whatever itself. So may file an application for initiating corporate insolvency resolution process with a adjudicating authority, right? केस फाइल होने के बाद जो भी adjudicating authority होगी, he will liable to pay. Now scheme under the code. What scheme under the code? So corporate resolution process timeline, right? Appoint two registered valuer to calculate and liquidation value, right? Here are showing how many ways and scheme under this code, right? So process of timeline, it is number of days ना. आपने डेटर्स एजिंग निकाला है क्या? किसी ने कोई काम कर रहा है टैली में? यस, पता है एजिंग कैसे निकालते हैं टैली में? एनीवन? नहीं पता? एसएपी में कोई काम कर रहा है, उसमें पता है कैसे निकालते हैं डेटर्स का एजिंग? नहीं पता है, चलो ठीक है. तो यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ डेज, है ना. अभी यहाँ पे फीलिंग ऑफ एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, राइट? जो भी रूल्स है उसका एप्लीकेशन पे करना है. देन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, डिक्लेयर मोरेटोरियम, कब से उसने दिया नहीं है. पब्लिक अनाउंसमेंट, एनसीएलटी टू अपॉइंट इंटेरियम रिजोल्यूशन एंड प्रोफेशनल, अपॉइंट टू रजिस्टर्ड वैल्यूअर टू कैलकुलेट लिक्विडेशन वैल्यू, राइट? जैसे गाड़ी का हम लोग सारी चीजों का वैल्यूएशन निकालते हैं ना, सेम थिंग. नाउ क्रेडिटर्स टू सबमिट क्लेम्स, क्लेम कितना का मिलेगा उसको वो सबमिट किया, 30 to 44. देन आईपीआर टू कॉन्स्टिट्यूट सीओसी एंड सबमिट रिपोर्ट. देन मीटिंग का प्रिपरेशन, देन सबमिशन ऑफ प्लान, अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, व्हाट इट इज, application for NCLT approval. So initiation of liquidation means n number of things are available. ये process है, ठीक है? ये process से ही हमें आगे आगे जाना होता है. Now adjudicating authority क्या करती है? NCLT जो है वो क्या करती है? वो आपका application means first they checked, right? Then deal with insolvency matter of company and LLP. मीन्स आपका ऑडिट वगैरह जो होता है ऑन दैट बेसिस पे. अपील टू एनसीएलएटी, ठीक है? देन डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी में डील विद इंसॉल्वेंसी मैटर ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म, अपील एज टू डीआरएटी, राइट? डेब्ट रिकवरी एक्ट ट्रिब्यूनल में जाके उसे देते हैं, जो हमने ऑलरेडी देखा है. ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शंस, ऑन विच ग्राउंड दे रिजेक्ट देयर क्लेम. Adjudicating authority within 14 days of receipt of application by an order. Now admit the application and reject the application.
So if it is complete, if it is incomplete, default occurred, default not occurred, right? So that is the process. Notice of rejection. Now adjudicating authority shall, before rejecting application, give notice to applicant to rectify defects in application within 7 days from the date of receipt of such notice, right? So company has right to give notice regarding that process. Now time bound, court also give some time, right? First track 19 days to 180 days, then 19 days to 45 days, then 135 days to 270 days. मीन्स ये ऐसे वो फिर से प्रोसेस चालू करती है कि ये दीज में उसका आना चाहिए. Adjudicating authority after admission of application shall by an order, right? By an order they will applicable for that time bound. Declare the moratorium, cause a public announcement, and appoint interim resolution professionals. So that is the thing they will call. Now moratorium effect, section 14 1AD. Now what is moratorium? Adjudicating authority shall by order prohibit the following. What it is? Institution, continuation proceedings, then suits including execution of any judgment, decree of order in any court, transferring, encumbering, alienation or disposing of assets, legal right, beneficial interest, any action to foreclosure, recover or enforce any security interest created, including any action under SURFACI Act 2002, right? Recovery of an property by owner or lessor where such property is occupied. सारी चीजें अपनी हो गई है, इसलिए मैं फिर से इलेबोरेट नहीं करूंगी. नाउ मोरेटोरियम इफेक्ट कल भी हमने देखा था, कल के चैप्टर में, कल शाम को जो हमने देखा था करंट ट्रेंड्स एंड फाइनेंशियल केसेस में उज्जीवन बैंक का, तो उसका तो हम केस स्टडी कर ही रहे हैं, बट ऑल थिंग्स आर रिलेटेड, कोरिलेटेड, राइट? सो ऑब्जेक्टिव, it is moratorium effect, section 14 1AD, right? So maximizing value of entity to continue operation, no additional stress of business, supply of essential goods or services to the corporate debtors as may be specified shall not be terminated or suspended or interrupted. Central government in consultation with any financial regulator may specify such transactions. So moratorium period, section 14(1), order of moratorium made by adjudicating authority start from date of admission of applications and cease to effect date of approval of resolution plan or liquidation order, right? So all this most important. So कोई भी means काम अगर करना है, so that is the process and you follow the process. Now public announcement, what it is? Public announcement contain following information: name and address of defaulted corporated debtors, right? Name of register with which corporate debtor is incorporated or registered, last date of submission of claim, detail of interim resolution professional. Yes, if you are working in audit department now, so you know the process, and if you are going to do CA, CMA or CMA industry related, but process are same, and CS, so you know the terms and conditions, because laws, right? Laws affected everywhere, right? If you are a legal person, because company secretary is a legal person, he has authority to do everything only related to company or corporate or industry, and otherwise the matter will go to court and court has right to take a decision regarding that. Got it? So publicly announcement that the person कब का, आप पेपर अगर पढ़ते हो तो पेपर में भी ऑक्शंस के नोटिस दिए होते हैं एंड ऑल सेम कंडीशंस यू फाइंड देयर. आज भी आप पेपर देखेंगे तो कोई ना कोई ऑक्शंस दिखेगा ही आपको सिटी में आपके. So n number of auctions cases you find, and that cases
अगर आप रीड करते हो तो सेम नॉर्म सेम कंडीशंस उसमें देखेंगे, बिकॉज बैंक publicly announce that property company whatever. Got it? So that is the matter. Now penalties or false of misleading claims. So date on which the insolvency resolution process closure 180 days from the date of admission of application. Now public announcement shall be made in such manner as may be specified. Right? Now interim resolution professionals. Appointment by adjudication authority within 14 days from admission of application. Right? Now tenure shall not exceed 30 days from the date of appointment, and once IRP is appointed, it is a management of affairs of corporate debtors shall vest with IRP powered by board of directors, partners shall legal partnership form जो भी होती है stand suspended and will be exercised by IRP. Officers and managers of corporate debtors shall report to IRP. Financial institution maintaining accounts of corporate debtors shall follow instructions of IRP. Means everything, everywhere, means follow the rules. This is the resolution process. Okay, resolutions आपको मतलब जो भी companies होती है, corporate होती है, first whatever they take decision, they pass the resolution. And resolution appointment of committee of creditors may in their first meeting within 7 days of constitution committee resolve to appoint the interim resolution of professional as a resolution professional, replace the interim resolution professional by another resolution professionals. Resolution professional shall conduct the entire insolvency resolution process and image manage to operation company. So that is the process duties. They follow the rules, they follow the regulations of all professionals. Now duties of resolution and professionals, what it is: meeting of the committee of creditors, convey and attend all meetings, right? Mandatory होती है ये सारी चीजें. Now present all resolution plans at the meetings. Now documents, maintain an updated list of claims, prepare the information of memorandum, right? उनकी memorandum में वो सारी informations and claims होते हैं. Rights, take immediate custody and control of all the assets, including business records of company, and represent and act on behalf of the company. Now replacement of resolutions professional, what it is: COC to replace the resolution professional any time during the pendency of IRP. Forward name of other insolvency professional to adjudicating authority, right? Board of confirmation, and resolution passed. Without resolution it's not accepted, means आपका software ही नहीं लेगा. Now what is committee of creditors? देखिए ये सारी जो चीजें है वो लीगल चीजें है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, राइट? सो जो लीगल दिया है प्रूफ है उसी के हिसाब से आपको जाना है. अगर आपका नहीं फिलअप है तो आपको विद पेनल्टी पे करके फिर आगे जाना है. द प्रोसेस मीन्स यू शुड फॉलो द प्रोसेस. नाउ द इंटेरियम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शॉल collect all claims and determine of financial position. So constitute a committee of creditors comprising of all financial creditors, right? So all decisions of committee taken by vote not less than 75%, right? Not less than 75% in total 70, still total 75% you should do it. Related party, if no financial creditor shall exercise with functions, shall not have any right of representations, participations or voting. Now position of financial creditor is consortium agreement. Each financial creditor shall be the part of committee and voting share shall be on the basis of financial debt. This is the committee of creditors, means every person have fulfilled the norms of committee. Whatever is creditor, is debtor, it's insolvent, everyone. Now the position of financial creditors, when
थी एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स मीन्स एवरी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स मीन्स डेली ट्रांजैक्शंस अगर उसके साथ हो रहा है, राइट, डेली कम्युनिकेशंस ऑपरेशनल है, shall be considered financial creditor to the extent of financial debts means he is liable to pay और वो पे कर रहा है, डेट दे रहा है, that is voting shares to the extent of financial debts, he has right to pay financial debt, operational creditor to the extent of operational debt, assignment of operational debt, if an operational creditor has assigned or legally transferred any operational debt to the financial creditors, the assignee of transferee shall be considered as operational creditors to the extent of such assignment or legal transfer, right? So determination of voting share by financial creditors and IBC board may specify the manner of determining of voting shares. Now resolution plan. So preparation of information memorandum for formulating a resolution plan, providing to resolution applicant access to all relevant information. Resolution applications plan to fulfill their memorandum, resolution plan, approval is important, authority or sign is important, right? You just read the plan of memorandum, right? Moratorium period plan, debtors, creditors plan, every plans you should know, and it will pass liquidation of order, and court has right to pass the order, first board of director and then court. Now waterfall mechanism under insolvency bankruptcy code. The following debt will be paid in priority given below. Insolvency resolution cost and liquidation cost you should pay. Debt to secured creditors who have relinquished their security interest and workmen's dues, right? So wages and unpaid dues to 12 months, financial debt to unsecured creditors, workman dues for earlier periods, and following enforcement of security interest. That is most important. And remaining debt, they will decide where they collect, right? They will give some kind of times. बैंक ऐसा नहीं है कि आपको पट से करेंगे, या कोर्ट भी ऐसा नहीं है कि पट से, आपको टाइम देंगे, and give that time you should pay the liability. Now new institutions is Insolvency and Bankruptcy Board of India, Insolvency Professional Agencies and Information Utility. ये सबके थ्रू जाना होता है क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है ना, so it's too long process, therefore you follow all things. Now key benefits, what it is, time bound settlement of insolvency. Yes, there are time bound settlements. Now बुक्स एंड असेट्स रिकंस्ट्रक्शंस, बैंक का जो रिकंस्ट्रक्शंस है ऑन दैट बेसिस पे होता है. कंपनी इमीडिएट कंपनीज अगर हो तो उनको मिल जाता है ना बैंक का असेट्स का, बट जनरली स्लो ही होता है. बट स्लो बोलने से अच्छा है कि जो प्रोसेस है उनका रिकंस्ट्रक्शन का, तो अभी मार्केट में तो बहुत सारे है ही. जैसे टाटा ने बोला कि नहीं यार ये कंपनी का अच्छा है, थोड़ा सा ही मर्ज है, अगर मैं लेता हूँ तो प्रॉफिट में जाएंगी, तो वो लेगा, है ना. तो ऐसा बैंक के भी बहुत सारे उनके ये होते हैं, क्या बोलेंगे, उनके रिलेशंस होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, तो उनको ऑफर कर लेते हैं. सो कम्प्रहेंसिव कवरेज, companies, LLP, individuals and more can be added, and number of people are added in that transaction. So debtors of serial defaulters and protect workers. And number of challenges are available on that platform. That is not a magic, because benefit all follow after 3-5 years from now. अगर आपने ली भी ली, मर्जिंग कर ली, लिक्विडेशन कर ली, तो आपको 3-4 साल तो, जैसे बिजनेस में भी 2-3 साल तो आपको लॉस बेयर करना होता है. आफ्टर दैट यू विल गेट सम काइंड ऑफ प्रॉफिट. सो ड्राफ्ट प्रोसीजरल रूल्स होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवरल न्यू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, हाई वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस बॉन्ड, secured creditors, right? Then collateral value, trade creditors, unsecured creditors,
n number of things are there, usage of fund, bankruptcy, n number of things. So professional avenues are interim resolution of professional, resolution professional to prepare resolution plan, to present financial creditors, operational creditors, corporate debtors before NCRT, TRT and DRT, to present the winding up cases before the tribunal, to prepare scheme and seek approval from tribunal for revival and rehabilitation of sick cause. That is the statistics overall, right? कि क्या था statistics, right? So yielding revolution, टेबल 4 जो स्टैटिस्टिक दिया है करोड़ में कि ट्रिनिटी ऑटो कंपनीज लिमिटेड, नेम ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, सीडी मींस कॉर्पोरेट डेटर. सो ट्रिनिटी का नाम है नॉट गोइंग कंसर्न फॉर इस्ट वाइल BIFR, मतलब उन्होंने जो बैंक का था वो FIR फिल किया, तो इसमें S. डेट ऑफ कमेंसमेंट इनका था 2017, अप्रूवल मिला था जनवरी 2017 में, ठीक है. CIRP इनिशिएटेड बाय कॉर्पोरेट डेट के नाम से जाना जाता था, एडमिटेड बाय 17. यदि आप अगर पेपर पढ़ते हैं तो उसमें देखिए सारे फाइनेंशियल्स आपको इश्यूज वहां पे देखने को मिलेंगे कि कैसी कंपनीज और बैंक के थ्रू आते हैं ये सारे, ठीक है. लिक्विडेशन वैल्यू क्या था उसका, ठीक है. रियलाइजेशन कितना था, 70 करोड़ का था, रियलाइजेशन 99 करोड़ का था एक्चुअल में क्लेम जो मिला, और लिक्विडेशन वैल्यू कितना था 83. तो ऐसे ही n नंबर ऑफ कंपनीज का दिया हुआ है. अगर आप रोज पेपर पढ़ते हैं तो ये सारे वर्ड आपको रिपीटेड लगेंगे जो भी आज हमने सीखे हैं, राइट. देन कल्याणपुर सीमेंट है, देन प्रेशियस इंजीनियरिंग, n नंबर ऑफ कंपनीज आर शोइंग हियर, राइट. ये सेक्टर वाइज एनालिसिस है. एडमिटेड केसेस अंडर IBC कोड, स्टील रिटेल, स्टील कंपनी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, टेक्सटाइल, ट्रेडिंग, केमिकल, शिप. तो ये सारी देखिए प्रोसेस दी है. टोटल अंडर लाइन फॉल्ट 57,000, CIRP प्रोग्रेस, रिजोल्यूशन प्लान, लिक्विडेशन, n number of things are mentioned, right. So this is our financial crisis regarding IBC code. अब हम यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है. कल हम इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे. तो बिफोर दैट आज हमने क्या किया वो आप नोट करिए, नोट्स लिखिए. कोई भी नोट्स बनाता नहीं है और फिर बोलता है कि मैम हमको PPT चाहिए. कितने लोग हैं जो नोट्स लिखते हैं? नहीं लिखते है ना, कोई लिखता ही नहीं है, मुझे पता है. ओके देन, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? नो? क्वेश्चन नहीं पूछना है? ओके देन फाइन, विल सी यू टुडे इवनिंग. बाय बाय, टेक केयर.